beautiful, vivacious and super talented Miss Pariniti Chopra. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Can't see very well, but thank you so much. Thank you for having me, really. Okay, Pariniti, I think before they talk to you, I had a couple of questions for you. I mean, you have been such a youth icon for Indian youth. I mean, first of all, thank you very much for becoming Suzuki brand ambassador. No, not at all. I should be thanking you. It's a brand that we have been hearing for years now. Such a reputed, such a great brand. And at such an early stage in my career, if you've chosen me, I feel very, very honored. And I hope I can bring something to the Suzuki family. Pariniti, you have been riding Let's in the latest TVC, what you have made it. How has been your experience with the Let's? Oh, great, actually. I come from Ambala. It's a very small town. So even to go to school or to go for my tuition classes or to go for my singing classes, I always used to be on a scooter, because that is the most convenient thing for girls and boys, young girls and boys. And Let's is a scooter that really, personally, even if I was not the brand ambassador, it's really my favorite scooter I've ever ridden. It's really comfortable, it's really light. As you can see, I can ride it in my heels also. So it's really a superb scooter, and I'm very proud that I'm the brand ambassador. And you had something about the name too. We'd Yeah. like to hear that. This is why I don't tell you my secrets. Actually, what she's mentioning is, me and my best friend, when I was studying in England, it's so strange that the scooter is called Let's, because he and I used to speak to each other like that. Here, okay. He and I used to speak to each other like this. Instead of saying, okay, let's go for a movie, we used to say, let's movie. If I wanted to say, let's go to the mall, we would say, let's mall. So I have such a personal attachment to this name. So when I was first told that this scooter is going to be called Let's, I was silent, right? I was shocked for 2 minutes. I remember your I reaction. couldn't believe it that something that has been with me for so many years is actually translating like this professionally also for me. So it's a great personal connect I already have with the scooter. Language of the youth, I should say. And, Language of the youth, Pariniti, absolutely. I understand you have driven a couple of other scooters in a couple of the other films, Yes. Suzuki Access and Swish also. Yes, How's very been much. experience with that? Great, actually, in my film Davatesh, which I'm still shooting, you will see it at some point. I have, because I'm, part of the Suzuki family, I obviously wanted to use one of their scooters. So I've driven Access over there, and again, a great scooter. And I had Anupam Sir behind me, so that just shows it's a very sturdy scooter also, because two of us were riding it. But obviously, this brand just gives you great quality products. I don't have to say that again and again at all. So it was an obvious choice, really. We are very happy to have you with us, Pariniti. Thank you. Thank you, Pariniti. It's been great that you have been a brand ambassador for Suzuki, and I hope you all Thank the you. best. for I'm very proud. I'm very honored, really. I feel very special, actually, that you chose me, really. Thank you. Thank you very much. Thank you, Pariniti. Let's hear it for Thank you, Pariniti thank you, and thank the you, thank you, Suzuki thank you, Let's. Thank you. Give it to me. Sir, give the mic. What do you want? What do you want?
Thank you, Pariniti. Thank you, Ben. Atul San. Thank you, sir. Thank you very Request much. you to please, gentlemen, please settle down. Request you to please take your seats. Pariniti has done a great television commercial for Suzuki Let's. Let's take a look Let's watch it. Come, this way. We'll just go to the back. for the Suzuki Jigsaw. Superstar Salman Khan. to our brand ambassador, Mr. Salman Khan, and the brand new motorcycle from Suzuki, Suzuki Jigsaw. Thank you, Salman sir, for being with us today. First of all, many congratulations for Jai Ho. Thank you. Sir, you have been a brand ambassador for Suzuki for the last 2 years, but very few people know that you've been riding Suzuki for years. What has been your experience like? कैसे हो आप लोग? ठीक हो? जय हो। बहुत अच्छा हूं। सुजुकी पे आ जाएं। तो ये करेक्ट बोलती हैं कि अनु जी कि मैं सुजुकी पहले भी चलाता था, ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले, फ्री की मोटरसाइकिल्स मिलने से पहले। बहुत पैसे खर्च करके मोटरसाइकिल्स खरीदे हैं,
एक GT 125 हुआ करती थी मेरे पास, फिर एक हायाबुसा हुआ करती थी मेरे पास, अब सुजुकी वाले बहुत जेनरस हैं, बहुत अच्छी बाइक्स बनाते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। अब पूछना तो इनसे ये है कि ये मुझसे खुश हैं कि नहीं, मेरे यहाँ पर आने से इनके सेल्स बढ़ रहे हैं या बस मुझे झेल ही रहे हैं? I think before I leave it to the press, I think it has been a great association with you, sir. Thank you, sir. I mean, it'd be a privilege that we have been able to, please, we have been privileged to have it from the last 2 years. And I think we as a company are really indebted to you for whatever you have done it for the last 2 years. Thank you, very sir. much. And sir, Suzuki, so I'm brand ambassador, but you, Atul sir, and Anu, I am so fond of them. They're my family now. I don't think there's Thank you, any sir. better person than Atul sir. I think he is one of the most nicest, the noblest person that I've ever come across. He is like something else. इनके चेहरे पे ही दिखता है. I really, really like him. Thank you. You know, it's something else. Something else. He's the great guy. And loves his job. He's totally into bikes. He still rides them. So you all have had some great biking experiences together. Would you like to talk about them? So this Gixxer, which you Gixxer. have just brought in, has come out as a 155cc. Sir, Gixxer is ये मैंने पहले भी सुना. Yeah, the Gixxer 1000, GSXR GS 1000. What you see here, this 155cc product, is actually a combination of the speed and race from the Gixxer and the equipments from the Hayabusa, which is one of the better known bikes in India. So what you see here is a This combination. for a 155cc bike, isn't this like a large bike for that? मतलब कि it looks like more like a 250 or you know. Yeah, as we have launched a technology, Suzuki Eco Performance, SEP, we put it across. Eco Performance. Suzuki Eco Performance, SEP. What this gives a combination of the best of the power with the best of the mileage. Apparently, this is a very fast bike. The very fast bike. Yeah. Yes. It is. I've heard about this bike. You have been driving Suzuki different bikes, Ji. Hayabusa to Also Gixxer in the to. last film. In the recent, I think there was a Right. question which I could see was Inizuma 250cc. You Ji. have been riding it in your recent movie Jeho. I- How has been yeah. your experience? Sir, I've got the Intruder as well. Intruder as well, yes. And we've used the Intruder in Kick as well. It gets well. The bikes that we used in Jeho for the army sequence, and the yellow one on the road sequence, Right. Suzuki RM, very powerful bikes, 250. I think they're straight out motocross bikes, and I loved riding them. I had a blast on them. It was fell off also once, but that's fine. हाँ, वो रिग का कुछ प्रॉब्लम हो गया था शूटिंग के दौरान. वो रिग बेवकूफ़ ने यहाँ पे कैमरा लगाया और यहाँ पे रिग लगा दिया, तो रिग का जो बोल्ट था ना वो जाके टायर में फंस रहा था. सो ब्रेक मारा तो द बाइक टॉपल्ड ओवर. बच गए, जैसे बच गए पिक्चर में भी. I think before we give. हाँ, कल का जो कलेक्शन देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. आज का पता नहीं, लेकिन कल से बहुत खुश हैं हम. जी. Okay, We'll now open this session now for questions and answers. And So how in many fact, colours you- Mr. sorry. Aspi Batena, you would like to, sorry, you wanted to say Now, something? how many colors you have in this? How many colors? Colors, yeah. colors, five Five colors. colors. Five colors in this. Five colors. And it's you doing any like extra fittings or anything on these bikes? We'll be putting this bike actually on sale from July, August this year. Okay. So hopefully after that we'll take it forward. So you're saying that सिर्फ जुलाई के बाद ही मुझे बाइक मिलेगी? नहीं, because इनाजुमा मेरे पास बहुत पहले आ गई थी. I know. है ना? अच्छा, जो इनाजुमा जो आई थी, what is that called? T1 क्या? T1. हाँ, T1. वो टेस्ट वाली बाइक आई थी मेरे पास. And even that was so powerful. It's a beautiful bike. जो जयहो में यूज़ की थी. रोड बाइक है.
250 cc's. तो जब भी मैं निकलता वहाँ से, when I was shooting on the bike गोवा में, कोल्हापुर में वगैरह से, तो बाइक पे ज़्यादा रिएक्शन पड़ता था. बोला कि ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़ चल रहा है मामला, थोड़ा सा अपना ख्याल रखो. Like Pariniti, I asked you a question. I mean, you have been driving a Suzuki XS scooter also, very Yeah, strong. I'm very fond of this yeah, scooter. I ride that scooter in Bandra. I'm having a lot of fun on the A lot scooter. of fun on the scooter. In fact, when I was shooting for Kick in Indie Studio, from my chalet and my makeup room, I used to ride the scooter only. And then from there to the farm on the Suzuki. But it's good fun. I love the scooter. In Bandra, I ride the scooter. ज़्यादा करके रात को निकलता हूँ तो बड़ी बाइक्स निकाल लेता हूँ, लेकिन दिन के अंदर जब घूमता हूँ तो स्कूटर पे घूमता हूँ. It's so nice. Mr. Aspi Batena wants to ask a question. Sure. Aspi. When do you get a time to ride your bikes, and what is your association with Suzuki? And it goes with your personality. Whenever I want to know the population of Bandra, I come out on bikes. I want to see how many bikes are there, what bikes they're riding, you know, how safely they're riding, then I come out on bikes. So then I see all those, how many Suzukis are there, how well Suzuki is doing, how well the Access is doing. So I do that pretty much sometimes in the nights as well, when there are very few people. Then suddenly, once they start collecting, then I bandstand Carter Road and then Pali Hill back home. Thank you. Thank you. Anybody else who has a question to ask? Hello. We Hi, have Salman. ushers to assist you with mics. Hi, Yes. hi Salman. Yes, This is Hello. Aarti from Indian Drives. If you get a chance to take your girlfriend on a date, so would you like to take her on a bike or would you like to take your car? It's a simple मुझे- question. It just नहीं, ये मुझे सवाल ऐसा सवाल कल ही मुझे रात को सपना आया था कि मुझसे ये कोई ये सवाल जरूर पूछेगा कि आप, और आई थॉट इट वाज, यू नो, हु सोहेल वुड आस्क मी समथिंग लाइक दैट. वे सोहेल हाँ वो उधर बैठे हैं वहाँ पर कि सोहेल मुझसे ऐसा कि अगर कोई पीछे बैठता तो कौन बैठता. नहीं कोई जी मैं जी नहीं, बाइक पर जरूर लेके जाना. बाइक पर जाओगे. या. Okay. And what time it would be? क्योंकि मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट और बैक सीट में तो लोग बैठ चुके हैं. बाइक के बैक सीट पे भी बैठ चुके हैं. But I think bike is fun जब तक उनके बालों के पिन नहीं उड़ जाए. Hi, Salman. Yes, sir. The gentleman there, you have a question. हाँ सलमान. जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक ड्रीम, मेरा सुजुकी के ऊपर वो जो टैंक के ऊपर जो बैठाते हीरोइन को उल्टा फेस करते हुए, एक टिपिकल हिंदी फिल्मों का एक शॉट होता है. अक्षय कुमार ने आई थिंक 3-4 पिक्चर में किया है. मुझे अब अक्षय कुमार की आई थिंक वन कटरीना एंड हिम देन वो मुझे समझ नहीं आता करते कैसे हैं. मैं साइकिल चला लेता हूँ ऐसे हैंडल पे बैठकर. हाँ ट्राई करना पड़ेगा. या नहीं तो हो तो जाएगा. बोला कि अगर गिर विर गए तो फिर दैट इज द एंड ऑफ द डेट. हाँ सलमान. मलहम लगाना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. Yes, yes. आपने जय हो फिल्म में काम किया, फिल्म अच्छी नहीं लगी? नहीं किया. नहीं किया आपने, बहुत अच्छा काम किया. कब कहाँ किया? बहुत अच्छा किया. काम किया, लेकिन काम मेरा नहीं सवाल ये है कि आपने अपने दोनों भाइयों के साथ काम किया है, सोहेल और अरबाज साहब. बहुत ज्यादा आपको किया. आपको किसके साथ अच्छा लगा? सर आप मिले नहीं तो आप ही के साथ काम कर लें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. You worked with both brothers. Who did you like working with more? जी. Can somebody please give a mic to the gentleman? In the He doesn't need it. Yeah. You have Years, been years of entertaining practice. your fans through your films, and Jai Ho is the recent entertainer example. Would you put a condition when you undertake to be an ambassador to any product that just as your film, your character reached the common man, Aam Aadmi, even Suzuki should have a
easy approach to the Aam Aadmi so that he doesn't feel that, arey, it is out of my budget, out of my price. So ऐसा कुछ condition आपने लगाया था? सर इसका जवाब अतुल सर देंगे. Okay, I have already a mic. Okay. I don't know whether you came before the press conference started. We ran an ad of Hayate, which is a 100cc motorcycle, which is purely a Aam Aadmi bike. I mean, you can aspire for that bike and anybody can buy it very, very easily. And that's where the association with Salman sir started. And what you saw in the TVC actually is that's the bike he put it. And the tagline of that Suzuki Hayate, you nahi chalate, actually makes it for Aam Aadmi. Different prices, but it starts from about 43,000 ex-showroom price, different cities. And you were mentioning that you're also going to make it easier for the fans. It is available through finance and other facilities, so it's actually very easily available. So we're trying to make that easier. We're trying to make that easier. He's going to speak to his banks, and he's trying to get the loans done easier. Excuse me, Salman. Yeah, hi. This is Kalyan, and I'm from Panvel. Okay, my question is, how would you like to promote safety in terms of biking? Like, I am from a biking community myself, so I would like you to promote safe riding etiquettes to the rest of the people. Yeah. Two ways to look at this. I just hope people start spitting from buses. You know, there should not be gravel on the roads because bikes skid very easily. There should not be any oil leaks from cars. The biker's point of view, most of the accidents happen because of this. Lots of potholes on the roads. Of course you can do something about it. Stop riding, because those potholes are always going to be there. That is one specialty. Sorry. What? Salman. Ji. Salman sir here. Hello. And obviously wear helmets. Where is Vivek? Don't drink and ride. What else? ज़्यादा hero गिरदी मत करो. अगर stunts वगैरह करना है तो go to a place where you can do those stunts, you know, with full equipment and full padding, etc. Don't try them on the streets. Especially don't try them double seat or triple seat. Don't try them with women. I think the coolest thing to do is have a bike which is fast and ride it slow. Salman, आपके left में ही आलोक नाम है मेरा, मैं समझ में नहीं आता कि बाइक है और आपने उसको फास्ट, it's beautiful bikes, ride them slow, आराम से निकलो, zoom करके निकल जाते हैं, दिखता भी नहीं कि कौन चला रहा है, और I don't think women get impressed by this anymore. I'll add to his, during our conversation with him, I remember he says that when you put a helmet, you can't see the face. So he said from the very beginning, why don't you have a transparent helmet? So that at least when I'm riding, people can see me. Otherwise, it's of no use putting a full mask helmet. I've noticed this because the helmet is very essential. It's very important for safety. So all over America and all over these places, cars are a big hit there. No one rides bikes. So I was thinking, ye kaye ko? And then you go to places like LA and Florida, there are bikes there. The reason being is, one is the rest of the places, the weather, 6 months in a year, the weather's really bad. And you're like all, padded up, all suited up. You bought a really expensive bike and you're wearing a helmet and no one can see you. The shoshagiri ka jo hota hai na ek age ke andar, wo nahi hota. That is the reason why I've asked them to get transparent helmets done. So whenever these guys, this special lot of people who spend, एक typical branding type के होते हैं, जैसे कि हमारे Moranis brothers हैं, Versace पहन के घूमते हैं. The same type के bikers भी होते हैं, who are like typical, they bought expensive bikes, they want to be seen on the bikes, which is justified, which is a good thing. I do it myself. Why would you buy a bike and why would you ride it? Because you want to look good, you want to be appreciated. So
I've told Atul sir if they can get like, transparent, really cool helmets that you can see the person riding and the person is safe. सलमान आपसे सवाल लेफ्ट में आलोक मेरा ये सवाल है कि आपने बोला है 3 लोगों की हेल्प करो थैंक यू मत बोलना हाँ ये तो मैं यूं करते आ रहा था शायद लोगों को ऐसा लगा कि तीसरे दिन पे पिक्चर देखना तो तुम बड़ी हंसती हो यार मेरे जोक्स पर तुमको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है सलमान श्वेताब पीछे आपकी फिल्म जय हो सलमान आपकी फिल्म कुछ भी बोलता हूँ आजकल मैं कुछ नहीं सर मैं सर मुझे थैंक यू नहीं कहेंगे सर मुझे सुजुकी की 3 बाइक्स और देंगे That was a good one. सलमान अब तक श्वेताब पीछे आपके सामने जी एक मेरा फैन है I've been trying to get in touch with him for the longest time. पता नहीं कहाँ पे बॉडीगार्ड के टाइम पर मुझे मैंने उसके बारे में सुना था एंड वो करीबन 16 या I remember I told you this 16 या 18 किलोमीटर्स वो फिल्म देखने जाता है From his village he walks. From his village to the main theater. He doesn't have the money. तो जो भी उगाता है जैसे केले हैं संतरे हैं वगैरह he takes those fruits for कि आप हमको टिकट दो हमारी फैमिली को और हमसे ये फल ले लो या वेजिटेबल्स ले लो तो ही साइकिल्स और वॉक्स those kilometers. तो I thought I've been trying to get in touch with him for the longest time. I've got people there. तो वो साला मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं पे तो जिस दिन वो मिल जाएगा I'm going to give him one of these for him to take it. अब उसके बाद वो दे दूंगा उसके बाद बेच दे या कुछ भी करे वो उसका है क्योंकि obviously पैसों की ज़रूरत होगी तो but I'm going to give him one Suzuki. ये तो ये करूँगा सलमान अब मेरा दिल बहुत कोमल है I liked it. क्या मैं पूछूं सवाल पूछ सकता हूँ अब तक आपकी फिल्म को लेकर लोग आपको ट्रेंड सेटर मानते हैं जब आपकी फिल्म लगती है तो लोग उम्मीद करते हैं हर बार कि इस बार का रिकॉर्ड पहले से और बेहतर होगा अब इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है सर फर्स्ट डे और सेकंड डे तोड़ा है अपना रिकॉर्ड तोड़ा है लेकिन आपके जो 2 दोस्त हैं जो आमिर हैं शाहरुख हैं क्या आपको लगता है कि आपके स्टारडम जो अब तक एक जैसे जलते हैं नहीं सर क्या उनका जलवा बिखर रहा है या वो मानते हैं कि आपका स्टारडम अभी वो बरकरार ही हो या वो दोनों आपसे आगे निकल रहे हैं जो मिडास टच सलमान के बारे में माना जाता है जिसे हाथ लगा दे वो सोना बन जाए तो उसमें कुछ कमी रह गई है इस बार जय हो के साथ सर नहीं सर बिल्कुल कोई कमी नहीं रह गई जो आपकी जो एक सोच है वो थोड़ी सी मेरे बारे में कुछ ज़्यादा हो गई कोई भी किसी भी फिल्म के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता कि जब हम बनाते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है और लोग जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो एक फॉर्मेट से हो जाता है कि ये 18 करोड़ से 25 करोड़ तक एक बिजनेस करेगी तो 18 से 25 के अंदर कुछ बहुत कुछ 7 करोड़ का फर्क है तो दीज ट्रेड पंडित्स दे गिव दिस पहले ये रिएक्शन हुआ करता था कि कम फिगर्स देते थे और फिगर्स कुछ ज़्यादा होते थे इस बार अपसेट इसलिए हो गए कि उन्होंने ज़्यादा दी है एंड दे थिंकिंग इज गॉन रॉन्ग कम आए मुझे उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ेगा हमने हमारे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है एंटरटेन किया है एक्शन दिया है मैसेज दिया है हर चीज़ दिया है मेहनत की है अब वो देखो वो फिल्म चलती है अब जो कलेक्शंस की बात है कि 30 करोड़ या 21 करोड़ वो सब हाउ कैन यू कैलकुलेट समबडीज थिंकिंग इनटू कलेक्शंस कि आई वांट टू गो एंड सी अ फिल्म टुडे और मुझे बस नहीं मिली या मेरे बॉस ने मुझे छोड़ा नहीं या मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर निकला और मुझे अच्छी लड़की दिख गई और मैं उसके पीछे निकल लिया मेरा बच्चा स्कूल में फेल हो गया मेरा बच्चा गिर गया मेरी बीवी पकड़ी गई कुछ भी हो सकता है
वॉचमैन के साथ। हेलो या सर। घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दोस्त यार आए, क्या यार मनहूस शक्ल लेके बैठा है, चल जाके पिक्चर देख के आते हैं, और वो चला गया पिक्चर देखने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री की पंडित हैं, ये इसका कैलकुलेशन कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि आई थॉट कांट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। तो ये जो कलेक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द क्या बोलते हैं इसको, ओवरऑल कलेक्शंस, जो कि एक लाइफ टाइम के जो कलेक्शंस हैं, दैट इज द मेन थिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द फिल्म हैज टू डू वेल। इनिशियल्स लगते हैं विच इज़ डैम गुड। अगर ऐसा लगा है कि इनिशियल नहीं लगे हैं इस बार मुझे, देन नोबडी हैज़ फेल्ड बट मी, that I could not perhaps get in the people to come and see the film. कुछ भी हो। अब सलमान खान की फिल्म लगी, इसका मतलब कि काम छोड़ दे आदमी? आप बच्चों का ख्याल नहीं रखें, बीवी को प्यार नहीं दे, तलाक दे दे, तो ये तो नहीं होता ना। You have to live your life, और जब टाइम मिलता है you should go and see the film. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तनख्वाह मिली है, अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं, तभी जाके फिल्म देखना। Only then go and see the film. ये नहीं कि you know पापा we want to go and see the film, give us money, और बाप के पास, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। I guess I must be the only actor who says that. So for me it is them first, then my collections. मैं तो चलते रहूँगा इस रेंज में, हायर रेंज में या नीचे के रेंज के अंदर। जितना मुझे नाम कमाना था, शोहरत कमाना था, पैसे कमाना था, वो मैं कमा चुका हूँ। उसका ग्रीड, उसका लालच है ही नहीं मेरे दिमाग के अंदर या मेरे अंदर। अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट द होल फैमिली टू गो सी द फिल्म, व्हाट रबिश इज दिस यार? पहले पढ़ लें, होमवर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद जाके पिक्चर देखें। दीज थिंग्स कम फर्स्ट फॉर मी देन कि एक सेल्फिश compete करने के लिए अपने दोस्त यार के साथ कि हमारे कलेक्शन इतने आने चाहिए, वो हम जाके we promote the film to such a level and we go do so many things that people come into the theater to satisfy our egos and to be number one in this industry. I think the rubbish. हेलो सलमान जी। या विजय शंकर। और आई एम फाइन विद दिस। लोगों को इफेक्ट हो रहा है, मुझे, मैं तो इसमें आराम से निकल गया। मैं तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा और इस पे मेहनत करूंगा, किक इसके ऊपर, जय हो के ऊपर, उसके बाद मैं किक पे निकल जाऊंगा। अब वहां पे देखना है कि वहां पे किक मारते हैं या किक पड़ती है। हेलो सलमान जी। ये राइट हियर सलमान जी, राइट हियर, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर। सर आप ब्लेंड हो रहे हो सर, मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप। Because I'm already dark. This is Vijay Shankar. I'm from the media and also a classical dancer. Thank you. You're a classical dancer? Yes. नहीं. Would you like to see? Yes, sir. Thank you. Yeah. Shall I ask the question first and then dance? Or what? No, you can dance and ask the question. That's not If possible. you're a classical dancer, I wanted to be a classical question as well. Yeah. So it's a very basic No, question. dancing के साथ. They have to come to the stage. Come on stage, sir. Thank you. इतना तो allowed है आपको। अच्छा, ऊपर आने का बहाना चाहिए आपको? उधर ही। अच्छा, एक काम कीजिए सर, वो टेबल है वहां पे, ग्लास में हटा के टेबल पे। सलमान। अरे सर, क्या है, आप परफॉर्मर हो सर, आप किधर भी परफॉर्म कर सकते हो, वहीं पे खड़े होके डांस करते। Stage, otherwise I can't. नहीं, स्टेज पे नहीं सर, वहां पे अच्छे लग, अच्छी लाइट आ रही है आपके, बैक लाइट आ रही है आपके ऊपर। क्या आप जूते निकाल के बैठे थे क्या? घर आए हो आप? हाँ? सलमान, जय हो was a film with a social message and also first day की collections कुछ खास नहीं थे जैसे आपने कहा, but your fans have always been कितनी बार loyal. रबिन करोगे यार? No, but you have इतनी loyal बार करोगे तो fans, बुरा तो Salman. लगेगा यार। In the past also your films have worked because you have loyal fans. So all the factors that you said don't really go for your films as far as that is concerned. So what do you say? I don't know. In fact, even this time, तो we also confused कि जो reactions है theater के अंदर
और the collections हैं they're not matching up, so it's a very strange combination. And I only will say that the credit or the blame should, for any of my films, should come to me, not go to anybody else. So perhaps I have failed in bringing in the people. I tried to do something different. The people who've gone to see the film, they've expected something like Dabangg or Bodyguard or Reddy. They go time past 2 hours 20 minutes, 2 hours 30 minutes, enjoy. Some people must understood that this is not that kind of film. This is a serious film. फिर ऐसा मुझे ये ऐसा क्यों फीलिंग लग रहा है कि यार बहुत भीड़ भाड़ होगी, टिकट नहीं मिलेंगे, ब्लैक में टिकट लेने पड़ेंगे, तो संडे को जाएंगे या मंडे को जाएंगे, तो ये सबकी सोच हो गई होगी और कोई आया नहीं. सलमान, जैसे सुजुकी का टैग लाइन है अपना वे ऑफ लाइफ, आपका वे ऑफ लाइफ क्या है? इनफैक्ट लाइक व्हाट इज योर फंडा इन लाइफ? इतने साल से जानते हो सर आप मुझे. आई नो यू, लाइक आप अपनी लाइफ अपनी तरह से जीते हो, बट देन आई वुड जस्ट लाइक टू नो फ्रॉम. जैसे जीता हूँ वैसे जीता हूँ, जो हूँ वो हूँ. अब इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता पर्सनल फ्रंट के ऊपर. मुझे पता है कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हो, लेकिन अपना वे ऑफ लाइफ अपना होता है, जैसे आपका वे ऑफ लाइफ आपका है. बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी को ट्राई करता हूँ एटलीस्ट कि किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँ, और बार बार फेल होते रहता हूँ. समझे आप? सलमान, आपकी जो बाइक है उसका कलर ब्लू है, और ब्लू को देखकर मुझे सनी लियोनी की सारी याद आ गई, जो एक अवार्ड फंक्शन के दौरान आप तो. ये देखिए, बाइक है, बाइक का कलर ब्लू है, और ब्लू से आपको सनी लियोनी की सारी याद आई. हाँ, क्योंकि अवार्ड. कैसी हो आप? आई मीन ठीक हो? सर वो बहुत खुश थी, मतलब अवार्ड फंक्शन के दौरान आप. दिस इज हाउ सो अनफेयर. No. ये कैसा सवाल है? कि बाइक ब्लू है, सनी लियोनी की सारी ब्लू है, तो सनी लियोनी है. मुझे सनी लियोनी याद आती है. सर उनकी सारी अवार्ड फंक्शन की मुझे सारी नहीं याद आती, मुझे सर बाइक भी सेक्सी, सनी लियोनी भी सेक्सी, तो एक राइड पे ले जाएंगे? परिणीति कहाँ सेक्सी है? परिणीति बहुत स्वीट है. सनी लियोनी सर. परिणीति? सनी लियोनी. परिणीति और ब्लू साड़ी नहीं पहना. सलमान, एक सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि हंसी तो फंसी तो. सलमान आपसे एक सवाल है. या वैसे पिंक मेरा फेवरेट कलर है. इंकी पिंकी पोंकी. टू पनवेल सर, ज्यादा से ज्यादा लोनावला या पूना. अरे दैट इज रियली डेंजरस. हाँ, that is that night racing is it's happening in trains as well, which is it's a very scary thing. And I know these boys, they bet and they race in the nights, and every other day there's 1 or 2 kids getting injured or dying. I don't know, that has to stop. This used to happen when we were growing up, and then it stopped for the longest time. It started again, and that's crazy. That's not cool at all, because a lot of kids are getting injured. And they don't race with helmets. They don't race with any kind of gear. I think about 2 weeks ago, 1 kid died again. Yeah, that's really sad. This interesting conversation, nobody wants it to end, but we'll have to close this now. सर आपको ज्यादा पता होगा सर. सर हाँ, टैगलाइन से याद आया सर आपका कमर्शियल परफॉर्मेंस सवाल, डांस, क्लासिकल कमर्शियल से दिखा दो ना सर एक बार. उधर ही हट जाओ यार, मौका मिल रहा है. ऐसे ही लोग डिस्कवर होते हैं. आज जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं अभी जैसे कि डेजी वाज अ डांसर, नाउ शी बिकम हीरोइन. ये देखो, ओए होए क्या नजाकत है.
वाह सर, कैच वैच तो नहीं आएगा? Thank you, sir. Thank you. That वाह I वाह, think we देखा we've had enough questions now. देखा Salman प्रेस में भी sir. कितना टैलेंट है. इसे जरा वापस से पीपल ऑफ कॉमन मैन. चले ये नाटक ड्रामा कहीं और करना जाके. 24 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर. ऐसा लगता है कि ये मेरे को अटका सकते हैं सर, हाथ मिला लें एक ऐसा कि प्रेस के सामने. ये Thank you very much. I think that's all. Yeah. कमाल है सर. थक गए आप? इतना नाच लिए. वैसे वो कौन सा स्टाइल था? कुचिपुड़ी था, भरतनाट्यम था? कुचिपुड़ी. They will not leave me and I will not leave them. What's happening? They will not leave me, I will not leave them. Solo. I can't get a better pose between both of them. So Yeah, he won't no leave way that to place. move out of No way. So can we close this now? We've had a great conversation. Great, lovely. Sir, And thank you very much for being such a wonderful audience. Thank you very much, Salman. Talbe. So I'll take it. Yeah, that's it. You want him in the center? No. That's okay. Yeah, okay. And I'll stand. Yeah.